a step towards citizen centric approach, citizen centric, ठीक है। तो इसी तरह एविडेंस एक्ट हुआ करता था, उसको हमने रिप्लेस किया बीएसए से, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। It should be for police. You are scrolling your Instagram, whether you are battling online trolls or figuring out that harmless prank might accidentally land you in trouble, in danger. So it is very important for all of you to be aware about these three new laws. Just as the name indicates, the Indian Penal Code has been replaced by BNS. यंग जनरेशन पे तो इसका डेफिनेटली इम्पैक्ट पड़ना ही पड़ना है, बिकॉज ये जो जैसे मैंने अभी लेक्चर में भी बताया, जो ये 3 न्यू क्रिमिनल लॉज हैं, इसमें जो मेजर चेंजेस हुए हैं इसका जो अप्रोच है दैट्स एंटायरली डिफरेंट दैन द अर्स्टवाइल क्रिमिनल लॉज, क्योंकि ये विक्टिम सेंट्रिक है, ये सिटीजन सेंट्रिक है, ये आपका सीनियर सिटीजन सेंट्रिक है। तो इसमें बड़े सारे प्रोविजंस आपको मिलेंगे कि जिसमें विक्टिम्स के लिए बहुत ख्याल रखा गया, रिलीफ, रिहेबिलिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपनसेशन, बड़ा सारा। और ख़ास करके जो वुमेन फोक और गर्ल्स हमारी, उनके लिए एक चैप्टर ही अलग है इसमें, उनके ऑफेंसेस के रिलेटेड। तो उसमें एक ट्रांसपेरेंसी का भी एक एस्पेक्ट डाला गया है कि इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंटली हो और टाइम बाउंड हो, टाइम लाइन सेट की गई है खासकर उस सेक्शन में। Is it for the particularly Srinagar division or for entire Kashmir these programs are going on? Basically, this is by the order of MHA. Every district is doing it. I think every week one program is being held. Some programs are very big, participation is huge, and some programs are small, but participation is not so. But this is being done in every subdivision once a week. How do the response you feel, particularly from the students' end? Students have been we have done 3 programs. All the 3 programs we have done in the colleges and schools only. One in SP College, one in BEd College, or sorry, College of Education, and one in this Broadway Education Hub. So students are enthusiastic and excited about knowing and making themselves aware about the new criminal laws. You believe that this will be the future chapter for the young generation as well, as per the subjects are concerned? Definitely. As you know, the law has been always the favorite of one of the favorite subjects of the students, and with the immense changes in these 3 criminal laws, this will be very exciting and a good career for students. Thank you, sir. Thank you very much.